Hello students, today we will continue the unit number 3 rest portion means property of a laser beam. Property of a laser beam is basically divided into four different categories: monochromaticity, coherence of light, directionality and brightness. First of all, we will discuss in detail about the monochromaticity of a light. It results from the fact that all the photons are emitted because of transition between the same two atomic or molecular energy levels have almost same frequency. Means जो फ्रीक्वेंसी अमिट आउट हो रही है वो सेम एनर्जी लेवल से डी एक्साइटेशन से जब अमिट आउट होगी तो जो लाइट होगी उसको हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कहेंगे. इट इज़ मेजर्ड on the basis of a quality factor Q defined as the ratio of the frequency divided by the line width. Means change in the frequency divided by line width is equal to quality factor Q, and we know that we can write down this one quality factor in the format of wavelength lambda upon d lambda, means where nu is the central frequency of the laser beam. Now the degree of non monochromaticity is represented by symbol this one of laser radiation is reciprocal of a quality factor. Means non monochromaticity है जो means this one non monochromaticity is inversely proportional to 1 upon q. Q is a quality factor. Means from equation number first we can write down equation number second just reverse of equation number first. Means line width divided by frequency or delta lambda divided by lambda will give the value of non monochromaticity. Higher the value of quality factor, lower will be the non monochromaticity, and smaller will the value of quality factor, larger will be the non monochromaticity. This one is about a monochromatic light. Second one is about coherence of light. We know that the two beam of light are coherent when the phase difference between these waves is constant. If the phase difference between them is constant, then it is called coherent light, and if they are non-coherent, if waves are said to be non-coherent if they are random or a changing phase relationship. Now the question arises, what is the phase? As we have already discussed in our classroom, phase will tell us the location of a particle at a particular instant of time. Means let me explain with the help of a diagram. Let us suppose to understand the concept of a phase, let us take the two waves, wave 1 and wave 2. Their starting point is at O and O dash. O and O dash. Now when the time start t, let us put this one the time taken by the wave to complete a one wave, that one time t, this one is the t by 2, this one is equal to t by 4. At a t by 4 time we observe the particle of a wave 1 is at the extreme position, means peak of the crust, that one is known as amplitude, and in case of a second wave the particle is also at the location this one. Means both cases the particle is moving in the upward direction, so we can say the wave 1 and wave 2 are in same phase. So phase difference between them phi is equal to 0. Now let us take the third one wave, this one. If we compare the first and third case, what we are observing, when the time start measurement, the particle of the first wave is moving in the upward direction, and the particle of the wave O double dash is moving in the downward direction. At the t is equal to t by 4, the particle of a wave 1 is in the upward direction and the wave third is in the downward direction. So the wave first and the third are out of phase by the phase difference is 180. Third one, next we can take another one example. Here
the particle is O triple dash and it starts its journey from its peak point when the time passes at t is equal to t by 4. The particle is at this mean position and the particle of a first wave is at a peak position. So the first and the fourth phase difference is equal to 90 degree. The first wave is known as sine wave and the third wave is known as fourth wave is known as cos wave. We know that sine and the cos wave are differentiate by the phase difference of 90 degree. So phase will tell us the location of a particle at a particular instant of time. Means पार्टिकल कितने बजकर कितनी मिनट पे पार्टिकल कहाँ पे होगा, ये हमें किस चीज़ से पता चलेगा, फेज से पता चलेगा. फेज इज ऑलवेज मेजर्ड इन द फॉर्मेट ऑफ एंगल. तो डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इन द फॉर्मेट ऑफ एंगल इज नोन एज फेज एंड द सेकेंड टर्म इज पाथ. पाथ डिफरेंस. डिफरेंस बिटवीन द टू वेव इन द फॉर्मेट ऑफ डिस्टेंस. डिस्टेंस की फॉर्मेट में दो वेव में जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, पाथ डिफरेंस कहेंगे. इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स. तो difference between the, if we compare the case first and second, the path difference is equal to 0 because both the wave O and O dash are starting point are same. But if we compare the first and third, then the starting point is also same. But if we compare the wave first and wave third fourth, means starting point is different. Its starting point is here. If we draw in the reverse direction, it will meet at this one axis at a point, let us suppose A point. तो A से लेके O ट्रिपल डैश के बीच का जो डिफरेंस है ये क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा. तो पाथ डिफरेंस हमारे पास किस चीज़ से पता चलता है, दो फर्स्ट और फोर्थ वेव के बीच में जो डिस्टेंस की फॉर्मेट में डिफरेंस है उसको हमने क्या कहा, पाथ डिफरेंस का. और नाउ रिलेशन बिटवीन पाथ एंड phase difference. Phi is equal to 2 pi by lambda multiplied by x. Phi is phase difference and x is path difference. Now for if we compare the for wave first and fourth, phi is equal to 90 degree. तो phi is equal to 2 pi by lambda multiplied by x. 90 और इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाई बाई एक्स. इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाई बाई एक्स. कैंसल आउट, एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2. तो इफ़ द फेज डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द फोर्थ वेव इज 5/2, then the path difference between these two wave is lambda by 2. Sorry, lambda by 4. तो पाथ डिफरेंस हमारे पास कितना होगा, लैम्डा बाई 4 का होगा. यू नो दैट द पाथ टोटल लैम्डा कितना होता है आपके पास, दो कंजिक्यूटिव वेव्स, लेट अस सपोज द वेव इज इन दिस वन डायरेक्शन, द डिस्टेंस बिटवीन सेपरेशन बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव वेव्स को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं. अगर हम एक वेव के केस में लें तो दिस वन डिस्टेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4. तो दो वेव के बीच में पाथ की फॉर्मेट में जो डिफरेंस होगा, डिस्टेंस की फॉर्मेट में जो डिफरेंस होगा उसको हम पाथ डिफरेंस कहेंगे. एंगल की फॉर्मेट में जो डिफरेंस होगा उसको हम फेज डिफरेंस कहेंगे. नाउ बैक टू आवर टॉपिक, दैट वन इज coherence of light. तो in case of a coherence of light, if the two beams light are coherent when the phase difference between them is constant. अगर phase difference की वैल्यू constant रहती है तो coherence है, अगर variable और changing रहेगी तो non coherence होगा. Now types of coherence. Coherence are of two type, temporal coherence and spatial coherence. First of all, we will discuss in detail about the temporal coherence. If a fixed phase relationship exists between the amplitude for a length L from P to Q at a time t and t plus t, means let me explain with the help of this one diagram. इस लाइन के along wave propagate कर रही है. we have 2 points P and Q separated by a distance L. अगर phase यहाँ पे भी same है और यहाँ पे भी same है, through the length L, this one length L, that one for a time, यहाँ पे time कितना था, t था, यहाँ पे t plus
टाउ है। तो टी और टी प्लस टाउ के लिए एल लेंथ के लिए अगर फेज कांस्टेंट रहता है तो उस कोहेरेंस का नाम क्या होगा? टेम्पोरल कोहेरेंस होगा। नाउ वी नो दैट velocity इज इक्वल टू c इज इक्वल टू लेंथ डिवाइड बाई टाइम टी सी ले लिया हमने और लेंथ को मैंने कोहेरेंट लेंथ ले लिया। तो जो वो लेंथ जिसके लिए फेज सेम रहेगा उसको हम कोहेरेंट लेंथ कहेंगे। कोहेरेंट लेंथ डिवाइड बाय टाइम विल गिव द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट c। फ्रॉम दिस वन लेसन वी कैन फाइंड आउट कोहेरेंट लेंथ इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई बाय टी सी। द कोहेरेंस टाइम इज रिलेटेड टू द नॉन मोनोक्रोमेटिसिटी ऑफ ए लेजर। टी सी इज इक्वल टू 1/delta nu फ्रॉम प्रीवियस वन पेज। From if we substitute this one equation in this, we can find out this one value. Example Michelson-Morley experiment। Michelson interferometer है जो experiment, वो आपके पास temporal coherence का एक example है। Now second type of coherence is about a spatial coherence। Spatial coherence is it tells us the phase relationship between the field amplitude at the 2 points P and Q in a plane normal to the wave vector। ये wave vector हमारे पास इस डायरेक्शन में है, इसके परपेंडिकुलर दिस वन एंगल 90 डिग्री अगर P और Q पॉइंट के ऊपर मीन्स एक एम्पलीट्यूड के लिए अगर फेज सेम रहता है तो उसको हम क्या कहेंगे? स्पेशल कोहेरेंस कहेंगे। ए गुड मेजर ऑफ कोहेरेंस ऑफ लाइट सोर्स इज एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न। मतलब एक अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न अगर हम बना पाते हैं तो मीन्स सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट। एग्जांपल के तौर पे स्पेशल कोहेरेंस का एग्जांपल है यंग्स स्लिट एक्सपेरिमेंट इज द एग्जांपल ऑफ ए स्पेशल कोहेरेंस। नाउ नेक्स्ट वन टॉपिक इज अबाउट डायरेक्शनलिटी। इट इज डिटरमाइंड बाय द डिफ्रैक्शन लिमिट ऑफ आउटपुट अपर्चर। थीटा डी इज इक्वल टू बीटा बी लैम्डा अपॉन डी, वेयर बी कोफिशिएंट वैल्यू हम जनरली इसकी 1 लेके चलते हैं तो मीन थीटा लैम्डा अपॉन डी के बराबर होगा। अगर आपके पास डाइवर्जेंस इज बिगर देन द डिफरेंशियल लिमिट तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट विल चेंज टू दिस वन वेयर द डी इज रिप्लेस्ड बाय ए scattering area of scattering, where means area of scattering is larger as compared to the diameter of the aperture. So this one is the directionality. Here we have discussed about the different properties of the laser. Now the next one topic is about rate equation. Rate equation can be explained by the different situations. First situation is two level laser in which the lower level is ground state and the upper level is represented by n is known as excited state. At the initial state the number of atom ion present in the ground state are more as compared to the एक्साइटेड स्टेट। मीन्स एन एम की जो अमाउंट है एन एन से ज़्यादा होगा। एन एम इनिशियल स्टेज के ऊपर हम एम टी सपोज करके चलते हैं तो ब्रैकेट में मैंने एन एम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 लिख के चल रहा हूँ मैं। नाउ जब व्हेन यू इंसिडेंट द लाइट ऑन दिस वन two level system, absorption of light will takes place if the absorption is greater than stimulated emission. We have already discussion about the stimulated emission, that one emission in which the de-excitation is taking place, the external agency of force or we can say the energy, that one emission is stimulated emission. Stimulated emission के केस में एक्साइटेड स्टेट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती है, इट कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट। बट इफ़ द अब्जॉर्प्शन इज ग्रेट डोमिनेटिंग ओवर द स्टिमुलेटेड एमिशन तो हमारे पास ऊपर वाले डायरेक्शन में कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। मीन्स एन एन इज ग्रेटर देन दिस वन। कंडीशन फॉर द पॉपुलेशन इन्वर्सन, इफ़ द we have already defined the population inversion if the number density of atom ion or molecule present in the excited state are larger as compared to the ground state, this one stage is known as population inversion. And population inversion is achieved if the absorption is dominating as compared to stimulated emission. This one is about the two level system. Now let me discuss in brief about three level system. In case of a three level system, first one level is one ग्राउंड लेवल, थर्ड वन लेवल इज़ एक्साइटेड लेवल। जब हम यहाँ से बाहर से अब्जॉर्प्शन होगा तो यहाँ से आपके पास पंपिंग के द्वारा इलेक्ट्रॉन एटम आयंस ऊपर जंप करेंगे और यहाँ से फास्टली डीके होके सेकेंड स्टेज के ऊपर आ जाएंगे।
As soon as they will jump to the level third, they will come back to the level 2, and they will stay for a longer time interval at a level 2. So the population density of level 2 is greater as compared to 1. So this one is stage is known as metastable stage, where the electron atom ions stay for a longer time period as compared to ground state is known as metastable state, which is lying between the excited state and the ground state. And then they will come back by showing the laser action. This one is about 3 level, 1 level 1, level 3 एंड लेवल 3 से लेवल 2 के अंदर फास्ट डीके होके वो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से वापस आएंगे तो लेज़र एक्शन शो करेंगे. नेक्स्ट वन इज़ अबाउट 4 लेवल. 4 लेवल के अंदर हम क्या करेंगे कि हमने 0 लेवल लिया, एक्साइटेड लेवल 3 से रिप्रेजेंट किया, ये लेवल 2, ये लेवल 1. हमने बाहर से पंपिंग करी. पंपिंग इज ए प्रोसेस बाय विच बी इंक्रीज द concentration of the atom ion in the excited state as compared to the ground state. Pumping is are of different type. We will discuss in separate lecture about the pumping. We have also familiar with the term laser आर्क लैंप पंपिंग थी हमारे पास, केमिकल पंपिंग थी आपके पास, और गैस डिफ्यूजन पंपिंग थी. तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो टुडे यहाँ से हमने एक्साइटेशन करी लेवल 3 के अंदर, यहाँ से फास्ट डीके होकर लेवल 2 में आ गया. 2 से हमारे पास लेज़र एक्शन शो होगा, दे विल डी एक्साइट टू लेवल 1, और लेवल 1 से फास्ट डीके होके वो लेवल 0 पे आ जाएंगे. तो मीन्स 1 2 3 4. This one is the 4 level, 1 2 3 level, and previous one 1 and 2. Tomorrow onward lecture we will discuss the mathematical derivation for the 2 level, 3 level and 4 level, and we will also discuss which one level is better. Means 2 level, what are the advantage of 2 level system as compared to 3 level, and what are the advantage of 3 level as compared to 4 level, and what are their respectively disadvantage. We will discuss in coming lecture. Thank you students. Okay.